screen is visible to all of you? Anyone, please say. Yes, sir. Okay, fine, thank you. Okay, so in the last lecture session, we have talked about the transposition cipher techniques and how it is different from the substitution cipher techniques. So the first example is rail fence technique that we have talked about, and today we will discuss the row transposition cipher technique. So I'm moving to the digital board now. This digital board is visible to all of you. I'm writing like row transposition technique. It is okay? It is visible to all of you? Anyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Thank you. Okay, so in row transposition, the transposition technique we have talked about that there is no such key, or हम especially कोई key नहीं use करते हैं. तो रेल फेंस हमने टेक्निक देखा था. Today we will discuss about the row transposition technique with different form of key. Key use होगा यहाँ पर अलग तरीके से. Okay. So we can make a statement like it is a complex scheme, cipher scheme, than rail fence, because rail fence technique is very easy to decrypt. That's why. And in this row transposition technique, we can say that plain text is written here, is written in a rectangle form, in a rectangle, row by row. एक एग्जांपल से देखेंगे, डोंट वरी. Row by row, and we read the message definitely for converting into cipher text. So we read the message column by column. But we permute, because permutation of the ordering we use here, so we permute the order of the column, and this permutation of the ordering, we can say the permutation of column order becomes the key now. So not the specifically we do not use key here, but the whatever the ordering, we do the permutation, so that ordering will be the key. Now we can understand this thing with the help of one example. So for example, I am considering plain text here, nothing but suppose surgical, let's say surgical strike will be
happened. Okay, suppose this is the message or the plain text that we have to transmit. After applying this row transposition technique, so first task is to we can count the number of letter excluding the spaces. यहाँ space मैंने include किया हुआ है, but अभी हम space include नहीं करेंगे. So we can count the number of letters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, and 28. So 28 letters are there in message. Letters in message. Now we can consider the key here. As I told you that the order of column. So we can consider the key here. Okay, so there is a rule that key must be in between 1 to 9. Okay, so here we can consider here key is nothing but say 4, 3, 1, 2, 5, 6, and 7. Now this is the key pattern that we are going to use for doing the decryption with the help of row transposition technique. Okay. So for generating the cipher text, what we can do, or generating, I'm writing here, generating cipher text. Okay. So I'm writing the key as it is here, like this is key 4, 3, 1, 2, 5, 6, 7. Okay. Now what we will do, column wise, as I told you, we can see here that plain text is written in a rectangle row by row. Okay, and read the message column by column and permute the order of column. Okay, so after doing the permutation, so permutation is 4, 3, 1, 2, 5, 6, 7. आपका कुछ और दिल करता है तो आप कुछ और ऑर्डर का permutation का key arrange कर सकते हैं. Suppose this is the key. So first we will fill this one. We will not fill like this one. अभी तो डायरेक्ट आप इसको रो वाइज एंटर कर देंगे. Say S U R G I C A, then L here, then again S T R I K E, W I double L B E, then H, then A, then double P E N E D. Okay, so perfectly all the letters has been fit here in this key pattern, that is 4, 3, 1, 2, 5, 6, 7, because 28 letters are there, and 1, 2, 3, 4, 5, 7 key columns we have considered. So automatically letters are filled. But suppose here if you do not have the message letters, then you can fill the remaining positions with the random letters, say X, Y, Z, whatever, but you have to keep remember those letters that these are the appended ones. Okay, so abhi hum yahan par we can do another thing. Okay, now we can create
this rectangular box with the help of not with the help, we can create this rectangular box in form of different position, means position wise. Okay, so I'm writing here key again, fine, this something like this, and the position, let's say position of each of letters, we can say. Okay, so key is nothing but 4 3 1 2 5 6 7. so there will be no issue, क्योंकि जो लॉजिक था वो ये था कि आपको जो मैसेज है वो पहले रो बाय रो ही रीड करना है, आपने वैसे ही किया। तो ऑब्वियसली ये जो पोजीशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 say 8 9 10 11 12 13 14 say 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and 28, बिकॉज आपने डायरेक्टली ये लेटर्स को इस पोजीशन में फिट कर दिया। इसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी वो अभी मैं बताता हूं, बिकॉज नाउ वी हैव टू जनरेट द साइफर टेक्स्ट हियर। ओके, so what we will do for making the cipher text from here, we will read the message column by column. You can see here that read message now column by column, but in order, means first we will read this first column. So first column is having this one. First column is having the letters like R, T, L and P. Okay, after that we will read the second column, this one. Okay, so in second column letters are like G, R, L, E. Okay, after this in the similar way the third column we will read something like this, U, S, I and P. Okay, then we will read the fourth one after this. So fourth column is having the letters like S, L, W, A. Then we can read the fifth one. So fifth one is having nothing but I, B, N. And after this one we will read the sixth one. Third column हमने हाँ लिख लिया है, USI. Okay. Then sixth column like C, K, E, E, and at the end we will read the seventh column here. So it is nothing but A, E, H, D. And in numerical value wise we can write the numerical value also. It is okay? Anyone? Is it okay? Anyone may respond, please. हाँ सर ठीक है। Okay, okay. Okay, so now in similar way we can also write the cipher text in form of
the numbers. Okay, so we may write like this: 3, 10, 17, 24, then 4, then 11, 18, 25, then 2, 9, 16, 23, and then 1, 8, 15, 22, then 5, 12, 19, 26, 6, 13, 20, 27, and then 7, 14, 21, 28. So in this fashion, we may generate the cipher text, and uh, in the same way, we can also get back our plain text here. Now, the thing is, can we make it more complex? Yes, we can make it more complex if we will repeat this process twice or thrice. Agar I'm going back to the next slide. Okay, cipher text अभी जो भी आया था हमारा, I'm not writing it again. ये कुछ R T L something like this, and at the end it is like E H D. Okay, तो आप दोबारा से you can repeat this process. You can repeat the process with different key. Suppose 3, 2, 1, 7, 6, let's say 5, and 4, something like this. Again, we can arrange these things here, and we can do it 2 times and 3 times. And this technique is used in this fashion, definitely. Now, if I'll say to you that again, can we do it more complex? So the answer is yes, we can do it. How? If we include or not include, we can say the row transposition technique. Row transposition technique definitely with more than 2 or 3 encryption process, and then we can also add rail fancier. We can also apply rail fancier. So after using both the techniques of transposition technique, we can make this transposition method very complex one. So these are the simple methods related to the cipher techniques, basic cipher techniques. And after this, we have to discuss. Today there are only 4 students. Okay, fine. So basically, after this, we have to start public key cryptography. But before starting public key, as we have also discussed the MATLAB experiments in a lab session, so before this, we have to discuss modular arithmetic. इस मॉड्यूलर अरिथमेटिक में हम जो भी केसेस हैं, मेरा प्लान तो यही था कि इसको आज करने का, but it will take at least 1 complete lecture, and I don't want to leave this topic in between, but still a few basic points we will discuss today. Before starting modular arithmetic, I will ask you the one thing. क्या आपने कुछ इस तरीके का फील्ड के बारे में सुना है? Anyone?
GFP, Galois field, it is nothing but Galois field. सुना है किसी ने इसके बारे में? Someone is saying something. System is not working properly. I don't know why. नहीं सुना सर गैलॉय फील्ड के बारे में। अच्छा नहीं कोई ओके ओके अच्छा आप मैसेज कर रहे थे ओके फाइन नहीं सुना सर इसके बारे में। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो गैलॉय फील्ड होती है बेसिकली ये एक साइंटिस्ट था ठीक है उसने उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तो उनका नाम गैलॉय था उसके नाम पर ही ये फील्ड इंट्रोड्यूस किया गया और इसका बेसिक यूज होता है सॉल्व द पॉलिनोमियल्स of larger orders and P is nothing but prime. अब प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स इनका जरूरत क्यों पड़ती है बिकॉज अगर वी आर हैविंग quadratic equation like ax square plus bx plus c. Now we are having the fixed rule for getting the roots of this equation and it is called Sridharacharya rule. Something like this minus b plus minus underscore b square minus 4ac okay and upon 2a. I think कुछ इस तरीके से यही होता है ठीक है. So with this we can easily find the two roots of quadratic equation. But अगर जैसे ही आप थर्ड ऑर्डर पर जाते हैं something like this, क्या कोई मुझे बता सकता है थर्ड ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए रूट्स फाइंड करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो? Okay, there is no fixed rule. We are not having any such rules for finding the roots of any equation bigger than the order of 2. This is the condition. हम hit and trial लगा करके और थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर को फाइंड करते हैं या न्यूमेरिकल मेथड्स लाइक न्यूटन राफ्सन एंड अदर थिंग्स बट एग्जैक्टली वी आर नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर फॉर्मूला. ओके अब हम अपने क्रिप्टोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट गैलॉय फील्ड. अभी हमने की के बारे में बात किया था कि 56 बिट्स का भी हो सकता है और 128 बिट्स भी हो सकता है. सपोज मैंने 56 बिट्स ही लिया और प्लेन टेक्स्ट इस केस में हम रखते हैं सपोज 56 बिट्स. ओके तो किसी भी एक पॉइंट पर when you are doing encryption it might be possible that you may have the value something like this 56 plus 56. okay so कितना हो गया है 56 plus 56? कुछ तो बोलो यार. So 112. 112 फाइन. ओके तो किसी भी एक पॉइंट पर ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास इस 112 ये ऑर्डर मिल जाए. फॉर एग्जांपल मैंने जो प्लेन टेक्स्ट था वो कुछ इस तरीके से है लेट्स से 10011 समथिंग लाइक दिस. इसको आप पॉलिनोमियल में चेंज करेंगे
तो इसका मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है 56। बाकी रेस्ट आर जीरोस बट स्टिल 56 की भी सपोज मैंने सभी को जीरो कर दिया बट उसका मैक्सिमम ऑर्डर हो सकता है 56 अगेन लेट्स से k टू द पावर 56। अब किसी भी इंक्रिप्शन के में ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पर ये दोनों पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या ऐड हो रहा होगा। सपोज ऐड ही हो रहा है तो आपके पास एक नया पॉलिनोमियल आएगा जिसका ऑर्डर होगा x टू द पावर 112 एटलीस्ट। ये मैंने एटलीस्ट बोला है अभी यहाँ पर जब आप 56 का केस लेते हैं। अब आप खुद सोचिए कि सेकेंड ऑर्डर से ऊपर उससे बड़ा पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं है। देन हाउ वी कैन सॉल्व such kind of the bigger large order polynomial say x to the power 112, or if we will consider 1 to 8 bit case, then this polynomial order will become more larger. So if we cannot solve the polynomials, then we cannot do the cryptography even. So Galois field is the complete mathematics based on modular mathematics. Definitely based on modular mathematics plus based on the prime and co-prime numbers. So with the help of Galois field, the sub-polynomials, correlated sub-polynomials of the bigger polynomials we will get, and we solve those polynomials accordingly and get the answer. So this is the revolutionary method in even network security or cryptography. But the key thing is in Galois field, these are the two things. So this is also based on modular arithmetic or modular mathematics we can say, and prime and co-prime numbers. So that's why this modular arithmetic is the base of any mathematical design of mathematical design of any cryptographic technique. That's why this topic includes here in our subject or syllabus. So basically we have to talk about the modular arithmetic. And in general case, I can say that in modular arithmetic, what we have to do, we just do one thing. Whatever the range we are having, say mod m, and if we are dealing with mod m, it means we are having the number ranges from 0. 0 is always there. We cannot skip 0. No number system, no set of number theory will be completed if we will not include 0. So the range of numbers here 0, 1, 2, ... we can say m minus 1. Now the logic is we have to convert each number within this range. Okay, if number is already within this range, say any number say a, that is इसको ऐसे लिख सकते हैं, that belongs to this set 0, 0 to m minus 1, then there will be no problem or no issue. We can directly write the number itself like a. Okay, there is just wait. Okay, so the number is simply a. But second case, if number a is greater than or does not belong to this range 0 to m minus 1,
then we have to convert it in a new number that definitely will belong to 0 minus 1, say b, and this must belong to this set 0 to m minus 1. And similarly, if negative number is there, then what we can do, and if inverse number is there, then how we can convert it into this thing. And two important thing is there. One is we can consider here one example, say mod of 7. So what it means, we are having the values or the number set 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 7 numbers are there and mod 7 we are using. Now if we want to read 8 in mod 7 or something like this, 8 mod 7, so you can say, now this is the cyclic ordering. Now go back to here, after this 6, after this 7 will be 0 and 8 will be 1. So 1 is the answer, and this is called the mapping, like larger to smaller mapping. Larger to smaller mapping. So this is the possible case, but the problem is, and this is the problem for others, but this problem that I'm going to discuss, this is the strength of this modular arithmetic strategy. Okay, तो problem क्या है कि अभी हम बात करेंगे smaller to larger mapping. Suppose the same example means mod 7, we are dealing with the mod 7, and if I am writing one number, say 1. Okay, now I will ask to you that this number 1, it is representing to which number? Because what I am asking, मैं इसको फिर से लिख देता हूं, say x mod 7, if answer is 1, and if we are having only right hand side, can anyone tell me that what will be the value of x? Anyone? ये तो 8 हो सकती है, 8 तो है ही जैसे आपने लिखा हुआ। हाँ ठीक है, बट सर और भी नहीं हो सकती, मतलब हाँ, this is the thing, yes, exactly. 1 itself भी हो सकता है, 1 mod 7 is 1 mod 7 is also 1. 15 भी हो सकता है ऐसे तो। हाँ, 8 mod 7 is also 1. So there are infinite number of possibilities. It means smaller to larger mapping is very difficult, even impossible case. तो वो केवल तभी पता चल सकता है जब आपको पता है इंक्रिप्शन के टाइम या किसी एक प्रोसेस के पहले आपने किस नंबर को यूज करके mod 7 अप्लाई किया और आंसर आपका आ गया. So only you know this. ठीक है, so this is the problem to others. जो इंट्रूडर है उसके पास तो एक आएगा 1, अगर वो इंटरसेप्ट कर भी लेता है तो, but he or she cannot imagine कि ये जो 1 आया है कैलकुलेशन के बीच में mod 7 के केस में, ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. No one can guess no one can do the idea, no one can predict exactly. हाँ, 1000 में से एक बार किसी का हिट एंड ट्रायल, एक बार तो लॉजिक लग सकता है, लॉजिक क्या तुक्का ही बोलेंगे, बट एग्जैक्टली वी कैन नॉट से एवरी टाइम. नहीं है ना, देखो कोई ये ओपन प्रॉब्लम है वैसे, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज स्टिल एन ओपन प्रॉब्लम
कि स्मॉलर टू लार्जर मैपिंग इन मॉड्यूलर अरिथमेटिक इज स्टिल अनसॉल्व्ड केस। ये अभी तक नहीं, कोई मैपिंग नहीं हो पाई है, इसका कोई मेथड नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर अदर्स, बट दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ यूजिंग द मॉड्यूलर अरिथमेटिक, एंड दैट्स व्हाई वी यूज this modular arithmetic case, say Galois field, or simply modular arithmetic in network security related algorithms. आपने सीजर साइफर में भी देखा होगा, हमने mod 26 लिया था, अगर उसकी जगह कुछ और ले सकते हैं तो रीजन यही है उसका, ठीक है। So this is the key thing, and after this I have to discuss how we can convert a number like -a mod 7, and how we can solve a inverse mod 7. Simple. And I also want to talk the meaning of GCD and prime and co-prime. So prime numbers, I think you know very well. We can also discuss about the co-prime in the concept of modular arithmetic. Okay. So in the next lecture session, I will start with this, because this is the basic thing that I want to tell you, that why we use modular arithmetic. This is the main reason, this one. Otherwise इसका कोई मीनिंग ही नहीं था, सिंपल मैथमेटिक्स थी हमारे पास। और एक और मीनिंग ये है कि आपके पास डेटाबेस जिसको आप बोलते हैं, आपको लार्ज डेटाबेस रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मॉड्यूलर अरिथमेटिक यूज करते हैं, यू कैन कन्वर्ट योर कैलकुलेशन विद इन द रिसोर्सेज, सो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। बाय कंप्यूटेशन means cost effective in form of computation process, in form of even money basis also, if you deploy the system exactly. So we will see the different algorithms also in successive lecture sessions, but this is the basic mathematics about the cryptographic algorithm. और ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दो टेक्निक्स, ये दो चीज हमें स्पेशली सीखना है कि किस तरीके से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी मॉड को। So what is the basic logic? So right now from my side it is enough for today. Now I am stopping the sharing. If anyone wants to say anything, he or she may say or ask even, because there are only 3 students. So but still I have I will not repeat the thing whatever I have discussed in today's lecture session. I will start with the negative numbers and inverse numbers in modular case. So आपसे यही है कि अगर आपने आज का क्लास किया है तो आप नेक्स्ट क्लास जरूर करिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, बट इट विल बी इजियर टू यू, दिस इज द थिंग। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके सर, हाँ बोलें। सर आपने भी लाइक पब्लिक प्राइवेट पब्लिक की के बारे में बताया था कि मतलब आपने स्टार्ट करवानी है क्रिप्टोग्राफी, तो पब्लिक एंड प्राइवेट क्रिप्टोग्राफी सेम होती है, दोनों का अलग अलग डिफरेंट मेथड होता है? नहीं, अलग अलग होते हैं दोस्त, वो तो हमने पहले ही स्टार्टिंग, अच्छा शायद आपने स्टार्टिंग वाला क्लास में नहीं देखा होगा, मैंने अपलोड भी किया है, बट ज्यादा डिस्कस की अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ पब्लिक की, बट मैं आपको बता देता हूँ, पब्लिक की इज अ डिफरेंट मेथड एंड प्राइवेट की और कन्वेंशनल की इज डिफरेंट। इसके भी दो नाम होते हैं। प्राइवेट की सिस्टम को आप सिमेट्रिक की सिस्टम भी बोलते हैं और पब्लिक की सिस्टम को आप एसिमेट्रिक की सिस्टम भी बोलते हैं। रीजन क्या है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो अभी तक हमने जितने भी की एल्गो यूज किया देखा, प्लेफेयर हो या वो आपका सीजर साइफर हो, ये सभी सिमेट्रिक है क्योंकि इसमें एक ही की सेम की यू आर यूजिंग, ठीक है? सेम की। मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ इसके थ्रू, ठीक है? जस्ट आई विल टेल यू नाउ। स्क्रीन पर देख रहे हो? यस सर। दिस इज द सिमेट्रिक साइफर। इसी को आप प्राइवेट की भी बोलते हैं क्योंकि इसमें आप सेम की यूज कर रहे हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पर्पस दोनों के लिए, ठीक है? जैसे कि यहाँ अब इसमें प्रॉब्लम बस ये होता है सिमेट्रिक में या प्राइवेट में
कि आपको की भी किसी सिक्योर चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करना पड़ता है, क्योंकि आप सेम की यूज कर रहे हैं। बट पब्लिक सिस्टम में क्या होता है, हम पढ़ेंगे इसको, ये आगे का स्लाइड्स है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। पब्लिक की में पेयर होते हैं, एक पब्लिक की और प्राइवेट की। तो आप सेपरेट कीज यूज करते हो, समथिंग लाइक दिस। ये सब हम देखेंगे, ये पढ़ना है, ठीक है। दिस इज प्राइवेट की, दिस इज पब्लिक की। सो पेयर आप